Okay, yes, in this video we will discuss the Coulomb's law in vector form. And see, first of all, we will draw the Cartesian plane. This is xy plane, origin. Ready? This is the charge q1, which is at the position vector r1. This is the position vector of charge q2. And see, here these two charges are separated by this distance. And see, it is directed from 1 to 2. So obviously this is r21, which is r2 minus r1. And obviously its magnitude is given by r21. This is the modulus. So here modulus of r2 minus r1. Modulus of r2 minus r1. We will call it r. उसको हमने simply r बोल दिया है. Ready? So this is the separation between the two charges. R is the separation. This is in vector form, while this is magnitude, or it is in modulus. So obviously it is the magnitude. So r and r2 minus r1. See, from this we can take the unit vector. We can write the formula of unit vector. It will be something like this: r2 minus r1 upon r. Obviously ये formula हो जाएगा उसका. This r21 cap is equal to vector upon its modulus. Actually this is the formula of unit vector. Vector upon its modulus gives the unit vector. So r2 minus r1 upon r, it is a unit vector, r21 cap. इस तरह से हम r12 cap भी लिख सकते हैं, वो उसका अपोजिट हो जाएगा. तो सिमिलरली r12 cap is equal to r1 minus r2. And see, separation, magnitude of the separation will be same. तो वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. But here r2 minus r1, this is r1 minus r2. Symbol is r12, this is r21. Ready? So this is the magnitude r. Ready? तो ये हो गया r1 minus r2, and this is r12 cap. यहाँ से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, from this to we can also write like this कि r12 vector is equal to minus r21, because ये देखो दोनों फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं. अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि r12 is equal to minus r21. और वैसे भी देखो ना, this is directed from 1 to 2, while this is r12 will directed from 2 to 1. Both are opposite in direction, but they are same in magnitude, because separation तो वही है r. That's why this r is same for both. So this is one result we are taking from this. Now see, first we are taking that q1 into q2 means the product of these two charges, or product of the magnitude of these two charges. So obviously q1 q2 is greater than 0. Suppose it is greater than 0. ये कब possible है? When there are two like charges. See, if both are negative, then obviously multiplication is positive. If two are positive, then again obviously then it is positive. So here the force between the two charges is repulsive in nature. So obviously यहाँ पे एक डायरेक्शन आएगा और एक डायरेक्शन यहाँ पे आएगा. This is on force on 2 by 1, while this is force on 1 by 2. So this is force on 2 by 1, this is force on 1 by 2. Ready? तो बहुत सिंपल है, both are directed opposite to each other. मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो भी हम देख लेते हैं कैसे. और F21 का पहले हम इक्वेशन लिखते हैं. तो कूलम्ब्स लॉ तो हमने इसके पहले वीडियो में देखा ही है.
F21 is K into Q1 Q2 by R square. R square is the separation, ये हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है. While R21 cap, this R21 cap is the unit vector, and see, this is the unit vector along the direction of force on 2 by 1. So R21 cap is the unit vector along the direction of this force on 2 by 1. Ready? When we substitute this here, so we will get something like this. F21 is equal to K Q1 Q2 by R cube. See here R square, but now this is R cube. Why? Because when we substitute the magnitude or the value of this R21 minus R1 upon R, so this R and this R square will multiply and gives R cube. Ready? So this is R cube, and here it is R2 minus R1, or we can say that it is R21. Okay. Similarly, F12, this is force on 1 by 2. Ready? So obviously it is opposite to this R21, because R21 is directed in this direction. Ready? It is along the F21, but F12 is opposite to F21, so obviously this is in opposite direction. थोड़ा सा उसको हम अगर याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि सिमिलरली ऐसा ही फॉर्मूला लिखते हैं, बट पोजीशन वेक्टर हम लोग जो यहाँ पे लिए थे R1 R2 वो तो सेम रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने लिया है यहाँ पे R21, उसकी जगह पे हम R12 ले लेते हैं इनिशियली, थोड़ा सा समझने के लिए. तो देखो ऐसा हो जाएगा K Q1 Q2 by R cube, and this is R1 minus R2. R1 minus R2 ये वाला आ जाएगा. अब लोग हम देखो जानते हैं यहाँ पे R12 is equal to minus R21. इवन ये दोनों हम यूनिट वेक्टर के लिए भी लिख सकते थे कि R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, ऐसा भी लिख सकते थे. तो ऑब्वियसली देखो ये दोनों इक्वेशन में अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, इफ़ वी टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस, तो इट विल बी R2 माइनस R1, और देखो यही इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन आगे माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है. सो फ्रॉम दिस टू वी विल गेट F21 इज इक्वल टू माइनस F21. एक्चुअली ये इक्वेशन ऐसा दिखाता है कि दिस टू फोर्सेस F21 and F12 both are directed opposite to each other, but they are same in magnitude. Equal to जो साइन है वो दिखाता है कि they are same in magnitude but they are directed opposite to each other. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पहली बात तो कि Coulomb's law is valid for point charges, पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि it obeys the Newton's third law. Coulomb's law obeys the Newton's third law of motion, यहाँ से पता चलता है. अब देखो ये तो हमने किसके लिए लिया, रिपल्सिव फोर्स के लिए. दूसरा हम ऐसा भी ले सकते हैं कि Q1 Q2 लेस देन 0. सेम ऐसा ही कुछ हम कर सकते हैं. आप लोग थोड़ा सा इसमें समझ सकते हो, आप लोग ट्राई करना. देखो रिपल्सिव फोर्स कैसा है, इट इज़ डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर. अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, दे डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर. तो F21 जो है इट विल बी, नाउ इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, एंड F12 विल बी इन दिस डायरेक्शन. इसमें पोजीशन वेक्टर जो है उससे अपोजिट क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 2 by 1. इट मीन्स यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज फोर्स ऑन 2 by 1 इज अपोजिट टू R2 माइनस R1, एंड फोर्स ऑन 1 by 2 अपोजिट टू R1 माइनस R2. लेकिन फाइनली हमें रिजल्ट तो यही मिलेगा कि फोर्स ऑन 2 by 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन, रेडी, force, they are same in magnitude and opposite in direction. We will get same result, and we can say that it obeys the Newton's third law of motion. Here ये कब possible है, if there are two unlike charges. So these two are unlike charges, and this force due to these two charges will be attractive in nature. Because Q1 Q2 less than 0, तो obviously ये कब हो सकता है, अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो obviously its multiplication will be negative. Okay, thank you.